Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says if the external forces acting on a system have zero resultant, the center of mass. Fine. So देखो if net external force on any system is zero, then momentum of the system will remain conserved. Momentum change नहीं होगा. And what is momentum? In terms of velocity of center of mass क्या लिखोगे? Total mass of the system into velocity of center of mass. This is the momentum of the system, right? Momentum of the system हम दो तरह से लिख सकते हैं. Let's say ये system है, इसमें मल्टीपल पार्टिकल्स है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है. सो या तो हम सारे पार्टिकल का मोमेंटम लिख सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट पार्टिकल है तो इसका मोमेंटम p1 है, प्लस सेकेंड पार्टिकल का मोमेंटम p2 अप टू डैश डैश pn. इस तरह से लिख सकते हैं. आइदर वी कैन राइट इट in terms of sum of individual momentum of the particles, right? और क्या कर सकते हैं? टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइट? सो ये ज़्यादा आसान होता है. फाइन. ऑप्शन ए मस्ट नॉट मूव. देखो इफ मोमेंटम कांस्टेंट है मीन्स मोमेंटम इज नॉट चेंजिंग, देन मास तो कांस्टेंट रहता है. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी कांस्टेंट. फाइन. So must not move means velocity of center of mass should be zero. What we can say is the velocity of center of mass should be constant. Zero होना ज़रूरी नहीं है. That is a sub case. अगर इनिशियली रेस्ट में था तो हमेशा रेस्ट में रहेगा, बट इनिशियली अगर 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था सो इट विल कंटिन्यू मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड. सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग. मस्ट नॉट एक्सेलरेट. Of course must not accelerate is correct because velocity of center of mass is constant, right? If there is some acceleration then it will change. Velocity of center of mass will change because acceleration is nothing but rate of change of velocity. So option C की बात करते हैं, may move. Of course if it has some initial velocity then it will continue with that it will continue moving with that particular velocity. May accelerate. No, it cannot accelerate. So I think it's clear. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.